Our next respected guest has come all the way from Benin. Mr. Dembaba Muhanam is an advisor to the President of Benin. Not only he is a very staunch supporter of the Jamaat, he is also a dear friend and a close friend of the Jamaat. I would like to invite him to come and say a few words. His address will be again in French and it will be translated in Urdu subsequently. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Your Holiness, distinguished guests, dear friends, I would like, first of all, to express my sincere thanks to the Jamaat Islamic Ahmadiyya for the favorable condition provided to this annual convention and for the warm welcome and generous hospitality extended to all participants. I thank all the volunteers who have been working in this Jalsa since the beginning. I would like also to take this opportunity for remembering all the innocent lives which have been lost to terrorism in Lahore. Allow me to present, on behalf of the people and government of the Republic of Benin, my sincere condolences to all men and women who lost a friend, who lost a relative. Votre Sainteté, le 5e calife, chers délégués venus du monde entier à cette 44e convention de la Jamaat Islamique Ahmadiyya, c'est aujourd'hui un grand honneur pour moi de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour vous transmettre le message fraternel de paix du peuple béninois tout entier. Tout comme les années passées, le Bénin, mon pays, a le plaisir d'honorer une fois encore votre invitation à prendre part à votre Jalsa Salana qui se tient ici même à Londres du 30 juillet au 1er août 2010. En effet, aujourd'hui même, dimanche 1er août 2010, tout le peuple béninois célèbre dans la joie et l'allégresse les 50 ans de son accession à la souveraineté internationale. Malgré les préparatifs avancés de cet événement de grande importance pour tous les Béninois, le gouvernement du Bénin a accueilli favorablement l'invitation que lui a adressée la Jamaat Islamique Ahmadiyya par l'entremise de l'amir Rana Farouk pour assister à votre convention. C'est ainsi qu'une délégation que je conduis a été désignée par le gouvernement pour représenter notre pays, le Bénin. Sa Sainteté, le 5e calife, permettez-moi de vous dire que ce geste témoigne de la grande qualité des liens de fraternité et de coopération qui unissent le Bénin et votre communauté. C'est pourquoi mon pays, son gouvernement et son peuple ne ménageront aucun effort pour renforcer et consolider ces liens et surtout pour accompagner la Jamaat Islamique Ahmadiyya dans ses œuvres de développement sur toute l'étendue de notre pays. Que votre Sainteté, le 5e calife, me permette aussi de lui transmettre les sincères salutations et les remerciements du peuple et du gouvernement béninois qui se souviennent encore les 2 visites mémorables au Bénin en 2004 et en 2008 de Sa Sainteté, le calife 5. Ils tiennent à vous exprimer par ma voix leur profonde reconnaissance pour les réalisations que votre communauté accomplit et continue de faire au Bénin. Il me plaît aussi de rappeler
que depuis toujours, la Jamaat islamique Ahmadiyya travaille non seulement dans le domaine de l'éducation religieuse de ses membres, mais elle appuie aussi, à travers son ONG, Humanity First Bénin, ses formations spirituelles par des actions humanitaires dans toutes les localités de notre cher pays, le Bénin. C'est ainsi qu'on a vu Humanity First à l'œuvre lors des dernières inondations au Bénin. On l'a aussi vu organiser des camps médicaux partout dans le pays. Dans le domaine de l'éducation, votre communauté a construit 2 écoles primaires pour l'éducation des enfants de ces localités qui en avaient un grand besoin. Il en va de même dans le domaine de l'accès facile à l'eau potable. Dans le domaine de la spiritualité, vos mosquées sont disséminées partout dans le pays en vue de porter le message de paix et de fraternité. Les communautés religieuses du Bénin ne cessent d'apprécier à sa juste valeur l'immense contribution de la Jamaat Ahmadiyya Bénin à la création du Conseil interreligieux du Bénin, dont votre Amir est le vice-président, à travers lequel les communautés religieuses du Bénin organisent chaque année les journées interreligieuses pour consolider une collaboration étroite entre toutes les religions vivant au Bénin. Permettez-moi, votre sainteté, le 5e calife, de vous dire que la Jamaat Ahmadiyya Bénin ne peut bénéficier que du respect et de l'estime du peuple et du gouvernement béninois pour l'ensemble de ses œuvres. Au nom de la délégation béninoise présente à ces assises et en mon nom personnel, je dis, pour finir, ce qui suit. Ahmadiyya International Zindabad. République du Bénin Zindabad. Ahmadiyya Bénin Zindabad. Je vous remercie. Thank you very much. We will have Urdu translation. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. मुकरम दमबाबा मोहम्मद दाहिर साहेब जो कि सदर ममलकत बेनन के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की मशीर हैं, उनकी तकरीर का खुलासा पेश खिदमत है। वो कहते हैं, इज़्ज़त माब हज़रत खलीफातुल मसीहुल ख़ामिस, तमाम दुनिया से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, मेरे लिए ये बड़े एज़ाज़ की बात है कि मैं इस बड़े जलसा में बैनन की आवाम की तरफ से आपकी खिदमत में अमन व अख़ुवत का हमेशा रहने वाला पैगाम पहुँचा रहा हूँ। गुज़श्ता सालों की तरह इम साल भी मुल्क बैनन इस जलसा सालाना जो कि 30 जुलाई से 1 अगस्त तक लंदन में मुनक़द हो रहा है, इसमें शिरकत की दावत वसूल करके खुशी महसूस करता है। आज 1 अगस्त बरोज़ अतवार बैनन की आवाम 50वीं यौम आज़ादी मना रही है। इस अहम दिन की तकरीबात की तैयारियों के बावजूद जब बैनन की हुकूमत ने जमात अहमदिया की तरफ से अपने अमीर की वसातत से इस जलसा में शमूलियत के लिए दावानामा वसूल किया तो हुकूमत ने मेरी क़यादत में एक वफ़द भेजा है। तालीम के मैदान में आपकी जमात ने 2 प्राइमरी स्कूल तमीर किए हैं, जिनकी बहुत ज़रूरत थी। लोगों को साफ़ पीने का पानी मुहैया करने में भी आपकी ग्रां कदर खिदमात इज़्ज़त की निगाह से देखी जाती हैं। रूहानी तरक्की के लिए आपकी मसाजिद पूरे मुल्क में मौजूद हैं, जिनसे हमेशा अमन व अख़ुवत का पैगाम दिया जाता है। जमात अहमदिया का बैनन में तमाम मज़ाहब को इकट्ठे करने और उनकी एक तंजीम इंटर रिलीजन काउंसिल के क़याम पर की जाने वाली कोशिशों पर तमाम मज़ाहब हर वक्त शुक्रिया अदा करते हैं। अमीर बैनन इस तंजीम के वाइस चेयरमैन भी हैं। इस तंजीम के तहत हर साल तमाम मज़ाहब में
تعاون اور بھائی چارہ کو فروغ دینے کے لیے بین المذاہب کانفرنس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ حضور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، آپ مجھے عرض کرنے کی اجازت دیں کہ ان تمام خدمات کی وجہ سے بینن کی عوام اور حکومت جماعت احمدیہ کے لیے بہت احترام اور محبت کے جذبہ رکھتی ہے۔ آخر پر انہوں نے 2-3 نعرے لگوائے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔